Namaste. Welcome to this video. Organizer team is currently in Jodhpur, Jodhpur's Gangana village. This village primarily consists of Pakistani Hindu refugee families who have migrated to Bharat. Over years, many have migrated here before 2014, and they now hold citizenship of Bharat. And those who fail to fulfill the normal criteria to get citizenship of Bharat have gained it through CAA. So currently, I am at this Basti where Seva Nyay Utthan Foundation has worked tremendously well. They run a Bhojan Shala here, they run a study center, they run a martial arts center. Currently, I'm outside a study center run by Seva Nyay Utthan Foundation. Seva Nyay Utthan Foundation is a NGO run by renowned journalist Swati Goyal Sharma and say Sanjeev Nevar, who is also an activist. And so here it is. You can see the strength. This section consists of students from till 5th standard, है ना? 5th class तक के बच्चे हैं यहाँ पर? Okay. The guy who runs this center tells me that the strength currently here is 180 plus students. So 180 plus students daily come here and they get free education. इनका शायद इंग्लिश प्लस मैथ्स इन्हें पढ़ाया जाता है 5th तक वालों को, और अंदर चल रही है 8th तक वालों की क्लासेस, तो दे लर्न इंग्लिश हियर. आप भी इनसे बच्चों से बात करेंगे. हम इंग्लिश की क्लास थी ना आज? इंग्लिश पढ़ाया? चलो मुझे कौन बताएगा फिर क्या पढ़ाया है आज? हाँ, I'll ask Sonam to please pan the camera. Look at them. All of these students have their parents migrated from Pakistan to Bharat. हाँ, सबके मम्मी पापा पाकिस्तान से आए ना? Yes मैम. सबको पता है? Yes मैम. चलो भाई, अब सारे मुझे अपना एक एक करके नाम बताएंगे, वो भी इंग्लिश में. ठीक है? बताओ भाई, सबसे पहले कौन खड़ा होगा? Get up. What is your name? My name is Sandhya. Sandhya. Where do you live? I live in Gangana. Gangana. हाँ? Okay. What is your name? My name is Jethi. हाँ जी. Jethi. और कोई पोएम सुनाएगा क्या मुझे? कम. अरे ना इंग्लिश में. इंग्लिश में कौन सुनाएगा? कम प्लीज, कम फास्ट. आ जाओ, चॉकलेट दूंगी मैं. स्वाति दीदी को कौन जानता है? कैसी लगती है स्वाति दीदी? अच्छी लगती है क्या? स्वाति दीदी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आती है आप लोगों के लिए. हाँ हाँ. ये कौन है? इनसे भी क्लासेस लिया आपने? नहीं सर. नहीं लिया. ओके. चलो अच्छा, पोएम सुनाओ जल्दी से इंग्लिश की. इंग्लिश की नहीं. ओफो, इंग्लिश की कौन सुनाएगा? खड़े हो जा. Once upon a time, there was a thirsty crow. Cow, cow, cow. He looked here and there. He saw a small little pot with less water. He thought what to do. He got an idea. He collected some little stones, put into the pot, one by one. Dubak, dubak, dubak. Water came much. He drank the water and flew away happily. वाओ, वेरी गुड. क्या बात है. आप लोग यहाँ कब से आ रहे हो? कितना टाइम हुआ यहाँ इस क्लास में आते हुए? हाँ, 2 साल से आ रहे हैं. और अच्छा ये बताओ, यहाँ पे और क्या क्या खाने पीने को भी मिलता है क्या? कुछ तुम लोगों को क्या मिला? हाँ हाँ. मैं कभी दाल चावल, मैं कभी दाल रोटी, हाँ हाँ. मैं दाल, और जूस, केला. जूस, केला, आइसक्रीम, केला. ओहो, ये सब. I have been informed before coming here. I talked to Swati. She told me that she provides juices and fruits to students during summer, as it gets very hot here, and all these students have their parents working as laborers and two small factories, because they don't have citizenship of India, so they don't officially work in Bharat, but they work as laborers in fields
एंड मेसन वर्कर्स एक्सेट्रा. तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. और हमने सुबह इस कॉलोनी में घूमकर भी लोगों से बात की है तो पता चला कि उनके 8-8 बच्चे हैं, 10-10 बच्चे हैं. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन द फैमिली अलोन. इसीलिए दोनों पेरेंट्स काम करते हैं और उस समय पर इन बच्चों को इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. अभी हम थोड़े बड़े बच्चों के पास आएंगे. सो ही इज़ द वन, ही रन्स द सेंटर हियर. विल टॉक टू हिम. आपका नाम बताएं. My name is Rajesh Chauhan and I am a student of class 12th. I am working here since 2024. Okay, what do you teach here? I teach here only English. English. Yes. To the students of class 8 till class 8. Yes, only primary classes. Okay. Yes. Okay. So how are they performing? It is a very difficult but I am doing handle. Okay, you are trying your best. So अभी चलो इतना तो इनको बेसिक ऐसे राइटिंग और ऐसे कराते हैं आप. नहीं, only English speaking. इंग्लिश स्पीकिंग. Yes. कुछ बोलेंगे मुझसे, बात करेंगे. कौन करने के लिए आएगा? हाँ हाँ, इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज. कम. So she is the one we met in the school. She wanted to be an IPS officer. What's your name? IAS officer. Anjali. Aarti. Please come. Aarti wants to be an IAS officer, and now she will introduce herself. Batao. First of all, thank you. My name is Aarti Chauhan. I study in class 9th. My father's name is Devraj ji and my mother's name is Lahiri Devi. I study in class 9th. I want to become IAS officer. Thank you so much for listening me. Thank you. Thank you for talking to organizer Aarti. So this is a small setup. You can see coolers have been provided here. We'll go inside and see there's a washroom facility also for students, Indian Western both. Here's another classroom provided with projector etc. There's bookshelf. So this is a small center. It is all free for these students, and it has been constantly running since for the past 2 years. So now we will go to the martial arts center and see what kids are learning there.